Hi everyone, this side Diya. Welcome to Beauty Berries channel. Today I'm gonna create this festive look. So after all the skin prep, I'm starting with this 3-in-1 oil-free primer to make sure the base stays flawless all day. Next, a glow from within के लिए I'm using this illuminating primer infused with hyaluronic acid. This gives the perfect hydrated and radiant base. Moving on to foundation, I'm using this olive oil hydrating liquid foundation in the shade medium beige 06. ये बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है एंड गिव सच अ नेचुरल ड्यूवे फिनिश। अब फेस को थोड़ा ब्राइट करने के लिए आई एम यूजिंग द एचडी लिक्विड फुल कवरेज कंसीलर इन द शेड 06 हनी, फोकसिंग मेनली अंडर द आईज एंड ऑन एनी एरियाज दैट नीड अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा कवरेज। आईलिड्स के ऊपर भी मैं थोड़ा यूज कर लूंगी बिकॉज व्हेन आई विल यूज आई शेडो उसका कलर और ज्यादा एनहांस होगा। Now it's time to bring some dimension back using the Ultra Professional Face Palette, blush for that fresh peachy flush, a little contour to define the cheekbones, and of course highlighter जो मैं एकदम last में use करूँगी। Now it's time for the eye makeup and I'm using this eyeshadow palette using the peachy shade, blending it softly all over the eyelid. Then थोड़ा डेप्थ ऐड करने के लिए मैं ब्लैक शेडो यूज कर रही हूँ ऑन द आउटर कॉर्नर्स ऑफ माई आईज। दिस पैलेट लिटरली हैज ऑल द पॉप ऑफ कलर्स एंड इसका पिगमेंटेशन लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टू मेक द लुक पॉप, आई एम अप्लाइंग अ ब्लू शिमर ऑन द सेंटर ऑफ माई lids. It adds the most stunning contrast. And finally, a touch of white shimmer to highlight the inner corners. Finishing off the eye look with the Twin Turbo Dual Mascara for length and volume, it instantly lifts the lashes and make your eyes look so dramatic. And lastly, I'm using the highlighter from the face palette to make the whole look put together. I'm highlighting the high points of my face. And for lips, I'm going bold with a matte lip crayon in the shade 11, bright maroon. It ties the whole look together perfectly. And that's my final look, guys. Soft, glowy, and just the right amount of color for the festive look. I hope you liked it. Thank you for watching.